Hi, Namaskar, dosto. Welcome, friends. I am upgrading the RAM to Dell Inspiron 5570 i5 Core i5. This is the laptop Core i5 5570. With 4 GB, it is taking 90 seconds even after fresh reinstall. दोस्तों अभी जस्ट रीइंस्टॉल किया था विंडोज़, फिर भी 90 सेकेंड्स ले रहा है 4 GB में. फिर भी अभी तक घूम रहा है. कोर i5 4 GB है, फ्रेश इंस्टॉल किया है, 90 सेकेंड्स लिया है. अभी हम 16 GB रैम अपग्रेड कर रहा है. इसका पूरा स्क्रूज खोलना है. इसका कीबोर्ड का नीचे कुछ स्क्रू नहीं रहेगा, इसका चिकलेट कीबोर्ड है. सिर्फ पीछे का डोर का स्क्रूज ओपन करना. दिस इज अ प्लास्टिक ओपनर and we have to open in edge. डोर खोलना है सर. we खुल गया. Now you can see the RAM, SSD, battery and hard disk. Or this is the RAM. And you have to clean the fan and everything. If there is a dust, वो सभी क्लीन करना है. बैटरी बल्ज नहीं हुआ है. बैटरी is not bulged, so it is intact. So now we are upgrading it to 16 GB. This is the inches. When the laptop is open, you need to check the hinges screws. Normally it will be loose, so you have to tighten this. If it is not tightened, the base will break. When the hinges get tight, the base will break. कभी कभी hinges टाइट हो जाता है, तब ये स्क्रूज लूज हुआ तो hinges ब्रेक होता है. इसलिए ओपन करने के टाइम में इसको थोड़ा लुब्रिकेट करना. ऐसे hinges का पास लुब्रिकेट किया तो hinges स्मूथ रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग. So this as M.2. This is normal mechanical hard disk, and that is M.2 NVMe SSD. This is Intel Optane, only 16 GB. This is not useful now. So checking heat sink screws. If it is loose, तो टाइट करना. लूज है तो टाइट करना सभी स्क्रूज का. फैन का नहीं तो फैन साउंड आएगा. So नया सैमसंग
DDR4 8 GB RAM 2666 स्पीड है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत वीडियोस डालता है हमारा लैपटॉप्स में, ऐसा ही सेल को डालता है और प्रोजेक्टर के सेल को डालता है यूट्यूब में। आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस द रैम्स 8 GB into 2। Now close the lid। तो अभी 16 GB में स्टार्ट हो रहा है। Now it is starting in with 16 GB। सिर्फ 14 सेकंड्स में बूट हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। So it is fully booted within 14 seconds। Thank you for watching. Please subscribe.